રાજસ્થાનના રાજ સિંહાસનની વાત કરવી છે, પરંતુ એ પહેલા મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। સુપ્રીમ કોર્ટે બાબા રામદેવની પતંજલિને ફટકાર લગાવ્યો છે। એલોપેથિક દવા અંગે ભ્રમણા ફેલાવવા બદલ ઝાટકણી કાઢી છે સુપ્રીમ કોર્ટે। લોકોને ગેરમાર્ગે દોરતી જાહેરાત કરવા બદલ કંપનીને આડે હાથ લેવામાં આવી છે અને સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે ભ્રમિત કરતી જાહેરાત ન કરે પતંજલિ। જો પતંજલિ ભ્રમણા ફેલાવતી જાહેરાતો તાત્કાલિક ધોરણે બંધ કરે તેવું પણ સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે અને જો તેવું નહીં કરે તો 1 કરોડનો દંડ ફટકારીશું તેવું પણ સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે। એલોપેથી વર્સિસ આયુર્વેદનો મુદ્દો ન બનાવે પતંજલિ। આઈએમએ દાખલ કરેલી અરજી પર સુનાવણી થઈ હતી અને આ સુનાવણીમાં પતંજલિ ઉપર સુપ્રીમ કોર્ટે ઝાટકણી કાઢી હતી। આઈએમએ કહ્યું હતું કે પતંજલિની ભ્રામક જાહેરાતોથી એલોપેથીની ઉપેક્ષા થઈ રહી છે અને આવું માત્ર પતંજલિ પોતાની આયુર્વેદિક દવાઓ વેચવા માટે કરી રહ્યા છે અને આ જ પ્રકારે જે સુનાવણી થઈ હતી તેમાં પતંજલિને ઝાટકણી કાઢતા સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે પતંજલિ આવી જાહેરાતો ફેલાવવાની તાત્કાલિક ધોરણે બંધ કરે અને જો તે આવું નહીં કરે તો 1 કરોડનો દંડ પતંજલિને ફટકારવામાં આવશે। દેવનાથ જોડાયા છે વધુ જાણકારી સાથે। દેવનાથ, શું વધુ અપडेट? बिल्कुल साफ तौर से बाबा रामदेव के खिलाफ जो लगातार वो एक बात कह रहे थे कि आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और तमाम तरह की बातें बाबा रामदेव पिछले कई सालों से कर रहे थे कि ये लोग एक गैंग बनाकर बाबा रामदेव के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। और यही जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से बाबा रामदेव को फटकार लगाते हुए कहा है कि बाबा रामदेव अगर इस तरह के विवादित शब्दों का इस्तेमाल करते रहेंगे, लोगों को भ्रमित करते रहेंगे, तो बाबा रामदेव के ऊपर एक अच्छी खासी पेनल्टी लगाई जा सकती है। हालांकि इसके बाद बाबा रामदेव एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के समक्ष आते हैं और कहते हैं कि मेरे पास बाकायदा सबूत है और साथ ही वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करने का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर हमें दोषी पाती है तो हम बिल्कुल सम्मान करते हैं और ना सिर्फ कुछ राशि बल्कि वो एक अनुमानित राशि का नाम भी लेते हैं, 1 करोड़ का जिक्र करते हैं कि इतनी राशि का चार्ज हम पर लगाया जा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है कि बाबा रामदेव किसी विवादों में फंसे हो। इससे पहले भी बाबा रामदेव के और भी प्रोडक्ट हैं वो लगातार विवादों का शिकार होते रहे हैं। आज जब साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है कि बाबा रामदेव किसी एक खास विशेष वर्ग को टारगेट करते हुए एक तरह से छींटाकशी कर रहे हैं या फिर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और साफ साफ शब्दों में अगर कहा जाए कि पतंजलि की तरफ से ये कहा जा रहा है यानी कि हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो बिल्कुल पाक साफ है, बाकी जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं वो लोगों को भ्रमित करती हैं। बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया है कि हम सिर्फ मोटी मोटी बातें नहीं करते हैं बल्कि हमारे पास एक एक चीज का प्रमाण है जो हम कह रहे हैं। अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही बाबा रामदेव ये भी कहते हैं कि हमारी कंपनी पतंजलि ऐसी कई दवाइयां बनाती है जिसका असर 7 से 8 दिनों में देखा जा सकता है और कई लोग जो है उसका लाभ भी उठाते हैं। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव को फटकार लगा चुका है तो रामदेव सिर्फ और सिर्फ मीडिया के समक्ष आकर अब एक तरह से कहें तो सफाई दे रहे हैं तो शायद गलत नहीं होगा। दिव्या जी देवनाथ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। તો જે રીતે પતંજલિ દ્વારા જે ભ્રમણા ફેલાવવામાં આવી રહી હતી અને તેમાં પણ ખાસ કરીને પોતાની આયુર્વેદિક દવાની સાથે એલોપેથી દવાની સરખામણી કરીને અથવા તો તે ખરાબ છે અને આયુર્વેદિક દવા જ અમારી સારી છે, આ રીતે તે જાહેરાતો કરતી હતી જેને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટે તેને ફટકાર લગાવી છે।